realistic, and objective, keeping realistic, keeping real personal view. Should things be going really well, will they continue? Do set a target. I don't keep going about the target. And because some people get very upset. Well, I'm doing very well, look. Yes, you're doing very well. I have to go another 2 minutes. Fine. But there is a cut off point. We need to do this. It's a 30 minutes. Hello everyone. So the first case that we have today is a young lady. She's a 31-year-old female patient with a prior history of peptic ulcer disease, currently diagnosed hypertensive, and she's currently on antihypertensive medication. She's now here with a complaint of bleeding per rectum and weight loss, which is around 3 kgs, and this has been happening on and off for the past 2 years. Can everybody hear me? We can hear you. All right, okay. So we'll be starting the first case shortly. Thank you very much. Thank you. So, in the UK, by pressure, we won't necessarily do the colonoscopy. Here, to understand what we want to do is put in the UK, by pressure, we practice on that. Then what we'll do, we'll ask you about your aims and objectives. We'll then ask you to start the test. I will be looking, I can only speak for me, but Bashar, if you don't feel doing very similar. I'll tell you what I'll be looking for. I'll be looking how you communicate with the tech guys. Hello. How you communicate with the patient. I'll be looking at it. Yeah, Not me. So we're looking at how you communicate with the tech guy, more importantly how you communicate with the patient. Next we'll be looking at what the intentions are. We'll be letting you manage the patient to a point. So what is your करेंगे हाँ मतलब कोई डजेंट मैटर क्योंकि एक लाइव जाएगा एक नहीं या बीच में ये स्विच ओवर करेंगे ठीक है ना तो दैट डजेंट मैटर या ठहर एक मिनट मैं उससे पता कर लूँ कि क्या वो है शनीर वो स्टार्ट सिमल्टेनियसली करना है ना मतलब दोनों स्टार्ट करें सिमल्टेनियसली Hello? अच्छा Can everybody hear me? ओ आई सी अच्छा चलें ठीक है Okay. This is our second case अच्छा for ठीक today. है It's अच्छा हम a स्टार्ट हम कर रहे 29-year-old हैं male क्योंकि patient पॉल तो उधर है ना who अभी has इधर ये presented with अनसुपरवाइज्ड है something coming out of ठीक the है anus and constipation. He's had constipation and this feeling of something coming out of the anus for the past 2 years. He has no prior comorbids and he's currently on no medication, no prior history of surgery either. Thank you. सॉरी डॉक्टर साहब आई जस्ट मिस दैट इसको बंद करके इधर बंद कहाँ से होता है ऑफ किधर इधर से हाँ हाँ अब बताएं मुझे इसका क्या चेंज इन बाउल हैबिट्स है It's on constipation and something coming out of the anus for the past 2 years. He's had a prior colonoscopy which was normal, but the symptoms are reoccurring. That was back in 2017. अच्छा अच्छा ठीक है सो चेंज इन बाउल हैबिट्स हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड समथिंग कमिंग आउट ऑफ सेडेशन आप क्या क्या है आपके पास वो मिडाजोलैम 2 मिलीग्राम दे दें और वो जितना आप देते हैं हम लोग फेंटनिल यूज़ करते हैं ना इसलिए मुझे इसका नहीं पता हाँ ये ट्रांसमिट कर दें क्योंकि वहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा ये ट्रांसमिट करें ठीक है सर के साथ तो सेट कर देना फ्रंट व्यू वाली पूरे नीचे जैसे सर वाला उस तरह कर देना और पूछ के करना सर ठीक है सर मैं उधर खड़ा हो जाता हूँ तो करा देता हूँ चलो उनको हमारी आवाज़ आ रही है हाँ पॉल को बोलो वो बात करके Paul, can you hear us?
We can't hear you. I think it's your mic is not switched on. Still can't hear you. Can you see us? Paul, can you see us on the screen? I don't think you can. No. बेटा ज़रा इसका लिंक सेटअप करने के लिए They can see us? But they can't hear us. They can't hear. Okay. अच्छा चल ठीक है. हाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं चलें. Okay, they can hear us now. Okay, fine. चलें. Can you hear me? Yeah, we can hear you now. It's not for you. Right? Paul, can you see us and hear us? We still can't hear you. अच्छा ठीक है. चलो. अच्छा ठीक है. हाँ. Sorry. I'll just come across here. ठीक है बेटा. ठीक है सही है. अच्छा. ये खैर है थोड़ा सा हटा दें ताकि ठीक है. अच्छा इतना मोटा गॉज ना पकड़े ताकि आपको ग्रिप फील हो ना. ठीक है ना ताकि so that you feel what's going on there. या ठीक. हाँ एक दो वो हो तो ठीक है लेकिन बहुत मोटा होगा तो आपको फील नहीं होगा कि क्या है. ठीक. अब टिप अप करें. टिप अप. बड़ा भी जब डाउन करेंगे तो टिप अप होगा. ठीक है. थोड़ा सा विड्रॉ करें. जब भी you get too close to the mucosa there's no point in pushing because you won't get anywhere. ठीक है. तो टिप अप. टिप अप. हाँ. Now you can see the lumen there. ठीक है. और clear your lens. वाटर प्रेस करें उसके ऊपर. हाँ that's good. Okay. जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो आप कीचड़ हो आपके विंड स्क्रीन पे तो आप ड्राइव नहीं कर सकते ना. तो सेम अप्लाई. अच्छा ठीक है. नाउ एंटी क्लॉकवाइज इसको थोड़ा सा टिप अप. टिप अप. टिप अप. वेरी गुड. नाउ एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मीन इस तरफ. क्रिकेट आप खेलते हैं? अच्छा. तो अगर आप ऑफ स्पिन करेंगे ना दैट इज क्लॉकवाइज टॉक. एंटी क्लॉकवाइज इज लेग स्पिन. ठीक है. इफ यू आर राइट हैंड बॉल तो एंटी क्लॉकवाइज इट्स ऑन योर राइट. ठीक है. ये 11 o'clock पे आपका लूमेन. जब भी वाइट आउट ये रेड आउट या पिंक आउट होता है ना तो यू विड्रॉ योर स्कोप. नेवर पुश ऑन दैट. ठीक है. अब टिप अप करें. शाबाश. टिप अप. टिप अप. टिप अप. आराम से बिल्कुल आराम से. ठीक है. अब थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज है. हाँ देखिए अभी ज़रा सा विड्रॉ करें. ये लाइट ज़रा कम कर दें बेटा. अच्छा ठीक है. अब हाँ दैट्स फाइन. अब यहाँ पे रुक जाएं आराम से. ठीक है. जैसे पॉल आपको कहता ना कि रिलैक्स. दैट्स द मेन थिंग. ट्राई नॉट टू रश क्योंकि द मोमेंट यू स्लो डाउन योर प्रोसीजर विल बी मच क्विकर. राइट. तो अब ना जस्ट डू अ एंटी क्लॉकवाइज हेयर. ऐसे करें लेग स्पिन की तरफ. हाँ एंटी क्लॉकवाइज नहीं दादर दादर. हाँ ये अब टिप अप. इसके साथ ही टिप अप करें. हाँ 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 टिप अप करें. अब हाँ ठीक है. विड्रॉ करें थोड़ा स्कोप क्योंकि आपका हाँ अब सही है. और थोड़ा सा लेंस क्लियर करें. शाबाश. अब एंटी क्लॉकवाइज एंड टिप अप. टिप अप. हाँ शाबाश. आराम से. हाँ ठीक है. सही है. बिल्कुल सही है. फर्स्ट क्लास. और इसी तरह मेंटेन रखें टॉक अपना.
और एडवांस करें, टिप, हाँ ये बिल्कुल सही है, सेंटर हो गया, आप टिप अप करें। देखिए इसका सारा मकसद आपका होता है ना, यू वांट टू ब्रिंग द ल्यूमेन एट 12 o'clock बिकॉज गेटिंग योर टिप अप इज ईजी दैन, ठीक है। फिर उसी से आपको वो करना होता है, मतलब यू कैन डू इट विद वन हैंड दैन। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो, हाँ, ठीक है, अब टिप अप, हाँ सही है। अब अच्छा, अब ये जब आप करते हैं ना तो द ल्यूमेन स्टार्ट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, तो इट ऑब्सक्योर्स योर व्यू। तो व्हेन यू आर डूइंग दिस, सो व्हेन यू सी द ल्यूमेन कमिंग, मतलब द वॉल कमिंग टुवर्ड्स यू, तो उस वक्त थोड़ा सा आप ड्रॉ कर दिया करें स्कोप अपना, ठीक है। अब सही है बिल्कुल। अब आप टिप अप करें, यू कैन सी द ल्यूमेन अप देयर, तो यू कैन टिप, बिल्कुल टिप अप करें और एडवांस करें जेंटली, ठीक है, सही है। Bakar, I'm testing a different mic. Can you hear me? Yeah, I can hear you, Paul. That's grand. Thank you. That's good. Yeah. Now your lumen is, see where the darkness is, that's where your lumen is. ठीक है, so it's about 1 o'clock-ish. So now you can do a bit of clockwise. Yeah, that's better. Okay. You a bit overdone it a bit, so अभी फिर वापस इधर आ गया, ठीक है। तो अब ज़रा सा विड्रॉ करें, थोड़ा विड्रॉ करें, हाँ। Now you can see where the lumen is. ठीक है। जब नज़र, अच्छा देखें, एक मिनट, लेट मी शो यू अ फ्यू टिप्स। ये आपने एक तो इसको ऐसे बड़ा ऐसे पकड़ा हुआ है ना, तो ये आपके हाथ में गुम जाता है। अगर पकड़ना हो ना तो द बेस्ट थिंग इज टू होल्ड इट नाइस एंड स्मूथ, ठीक है, लाइक दिस। दूसरा जो होता है, जब भी आप करते हैं ना तो टॉक ऐसे मत दिया करें, ये मेरे हाथ को देखें, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड पावर ग्रिप। इसमें सिर्फ आप यहाँ तक ही आपका हाथ जाता है, ठीक है। यू डू अ पिंसर ग्रिप फिंगर टिप में, तो आप जितना आपका दिल करेगा उतना आप घुमा सकते हैं, आप घुमाते जाएं ना, ठीक है। दिस इज द वे टू डू इट, क्योंकि जब इतना करेंगे तो यू कैन ओनली टॉक, यू कैन डू इट बट इट विल रिस्ट्रिक्ट योर मूवमेंट, सो यू नीड टू लर्न हाउ टू डू इट। और ये मतलब यू डोंट हैव टू लर्न इट नाउ, लेकिन ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपकी यू हैव टू स्ट्रेंथन द मसल्स इनसाइड योर हैंड, ठीक है। तो ठीक है, सही है। अब ल्यूमेन आपका इस तरफ है, तो आप इस तरफ इसको, और देखें जो, हाँ शाबाश, आप एडवांस करें जेंटली, शाबाश। अब ज़रा इस तरफ जाएं और थोड़ा सा तहम्मुल से जाएं ताकि यू डोंट लूज योर विजन, ठीक है। हाँ दैट्स गुड, विड्रॉ बिट नाउ अप देयर, ठीक है। अब थोड़ा सा विड्रॉ करें और ताकि यू कैन सी द ल्यूमेन, ठीक है। इट्स एट अबाउट 11 o'clock-ish, हाँ ठीक, हाँ वेरी गुड। हाँ थोड़ा टिप अप करें और एडवांस करें, हाँ टिप अप, हाँ गुड, विड्रॉ अ बिट, और टॉक अपना रखें, उसको छोड़ें नहीं, क्योंकि जब छोड़ेंगे ना तो जितना आपने मेहनत की होती है वो सारी ज़ाया हो जाती है, ठीक है। दैट्स गुड। इट्स अबाउट 11 o'clock, 10 o'clock, हाँ सही है, इस तरफ है, तो आप इस तरफ इसको घुमाएं, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। एडवांस करें, थोड़ा सा एडवांस करें, शाबाश। एंड देन यू टर्न योर टॉक स्लाइडली टू क्लॉकवाइज, हाँ क्योंकि आप लूमन अब उधर चला गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये रेक्टम में खासकर ये वैल्व्स होते हैं ना 3 4, तो उसको आपने जाना। अच्छा अब एडवांस करें, शाबाश, आपका उधर है, और क्लॉकवाइज टॉक लें, क्लॉकवाइज दें, और भी क्लॉकवाइज, और भी जैसे ऑफ स्पिन बॉल करा रहे हैं आप, हाँ दैट्स द वे, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। नाउ जस्ट होल्ड इट देयर। नाउ योर लूमन इज एट 4 o'clock, तो इसको और क्लॉकवाइज दें और थोड़ा सा टिप को डाउन करें, टिप डाउन, हाँ सी यू गॉट इट, दैट्स गुड। अब आराम से, रश ना करें, ठीक है। नाउ एडवांस एंड टिप अप सो यू कैन सी द लूमेन कमिंग अप टुवर्ड्स यू, वेरी गुड, दैट्स गुड। अच्छा शाबाश, कीप गोइंग, दैट्स गुड, कीप गोइंग, दैट्स गुड। यू गॉट द फुल लूमेन इन योर व्यू, दैट इज व्हाट यू वांट। अच्छा यहाँ पे व्हाट आई वुड एडवाइज यू इज कि डू अ बिट ऑफ सक्शन, क्योंकि हाँ बस दैट्स इनफ, because whenever you are struggling your finger is on the button and you end up
blowing out a lot of air. Abhi theek hai, that's enough. So you want to make sure that there is not too much tension in the bowel, right? You can advance now, theek hai? You can advance, you can advance, you can advance. ठीक है अच्छा नाउ एडवांस और टर्न अब उसको क्लॉकवाइज टॉक दें क्लॉकवाइज दें शाबाश दैट्स वेरी गुड और भी क्लॉकवाइज दें बेटा शाबाश दैट्स वेरी गुड ताकि ये बिल्कुल हाँ अब ठीक है यू आर डूइंग वेरी वेल नाउ टिप अप यू आर गोइंग अप टिप अप 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 हाँ खैर है बेटा अभी थोड़ा सा वो हो जाएगा यहाँ पे अब ज़रा सा बर्दाश्त करें भी ठीक होगा टिप अप करें अब थोड़ा सा हाँ यहाँ पे हाँ शाबाश और मामूली सा विड्रॉ करें अब आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा और विड्रॉ करें तो आपको पता लगेगा और टॉक मेंटेन रखें उसमें ये होता है कि आपका स्कोप फिर पोजीशन नहीं लूज़ करता ठीक है हाँ अब देखें कहाँ पे है ल्यूमेन ठीक है यू कैन नाउ जज वेयर इट इज़ मोर ऑन द क्लॉकवाइज टॉक दे शाबाश और थोड़ा सा एडवांस करें अच्छा हाँ ठीक है अब आपने पोजीशन थोड़ी यूज़ कर ली तो आप एडवांस करें शाबाश और टिप अप रखें क्योंकि लूमेन आपको ऊपर है हाँ ठीक है हाँ थोड़ा हाँ शाबाश ठीक है उधर है ठीक है शाबाश थोड़ा सा क्लॉकवाइज थोड़ा सा वो चेंज से वो है एयर भी काफ़ी टाइट है अच्छा हाँ थोड़ा सा ऊपर अच्छा ऐसे कर लेते हैं कि अब इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं ठीक है तो आपको आसानी होगी आप अपना स्कोप उधर रखें वो कर दें सुपाइन कर दें आप अपना स्कोप उधर भी रखें डोंट लूज योर पोजीशन ठीक है नहीं बेटा सीधा लेटें आसानी होगी आपको ठीक है हाँ हाँ कमर के हाँ हाँ और भी सीधा हो जाएं बिल्कुल इसको ज़रा और भी सीधा लगाओ अच्छा ये जो फालतू चीज़ें हैं ना ये बीच में से हटा दें ताकि आपका हाथ खुला हो ठीक है अच्छा थोड़ा सा इसको हाँ ऊपर वो करें लूमेन टिप अप करें शाबाश शाबाश गुड अच्छा दो चीज़ें होती हैं आपका जब स्कोप प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता ना तो थिंक अबाउट टू थिंग्स एक है लूप और एक है एयर कि लूपिंग हो रही है कि एयर चल रहा है ठीक है तो अभी क्या रेजिस्टेंस मिल रही है आपको जाने अच्छा मैं लेट मी शो यू दैट ठीक है क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो अब इस वक्त ये है ना कि मैं थोड़ा सा इसको निकालता हूँ बाहर ना जस्ट हैव अ लिटिल फील अभी ठीक हो जाएगा बेटा अभी आवाज़ कम कर अभी ये लूप है ना इसमें तो व्हाट आई एम डूइंग इज अब मैं टाइट क्लॉकवाइज टॉक अब देखें मैं किस तरह टॉक दे रहा हूँ सिर्फ दो उंगलियों से ठीक है तो इसमें ये होगा कि आप जितना दिल करते हैं आप टॉक दे सकते हैं अब जब मैं ये निकालूंगा ना अब देखो मैं निकाल रहा हूँ ना और एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो डिकम्प्रेसिंग हिम लेकिन अब देखें अब मेरा स्कोप खुद ब खुद ही आगे जा रहा है दो आई एम टेकिंग इट आउट एंड देयर इज क्वाइट अ बिट ऑफ अ लूप देयर और अच्छा वो इसको बहुत ज़्यादा दे दें सेडेशन थोड़ा दे दें हाँ दे दें इसको मैं ठीक है तो ये देखें काफ़ी कोई 20-30 सेंटीमीटर हमने निकाल दिया यहाँ से
ठीक है, तो ये सारा लूप था, तो लूप की वजह से उसको पेन होता है। अब आप ले लीजिए, ठीक है, अब आप टेकन द लूप आउट, तो नाउ यू कैन, बेटा से आप सीधा लेटे, आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसे करें, पाँव दर ऐसे कर लें, हाँ ऐसे, ठीक है, तो आप आ जाएँ। अब ठीक, क्या दिया आपने इसको? सर किंग्स डॉमी दिया 1-1 और अच्छा ठीक है, सही है, पहले 2-2 दिया था 1-1। हाँ नहीं ठीक है, सही है। टिप अप और क्लॉकवाइज टॉक, क्लॉकवाइज करें, नहीं ऐसे घुमाएं, हाँ देखिए ऊपर है, उधर है, और अब टिप अप करें, अब आराम से जेंटली एडवांस करें इसको, वेरी गुड, हाँ टिप अप करें, शाबाश, हाँ हाँ क्लॉकवाइज टॉक दें, शाबाश, गुड गुड गुड, वेरी गुड, टिप डाउन, हाँ, और टॉक दें उसी तरह, क्लॉकवाइज टॉक दें। अच्छा यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉक दें, और भी, और थोड़ा सा इसको डिकम्प्रेस करें, हाँ वो इतना काफ़ी है, ठीक है, अब जाएं सीधा, हाँ वेरी गुड, ठीक, हाँ अब जाएं, हाँ अब एंटी क्लॉकवाइज टॉक ऐसे, वेरी गुड, हाँ गुड गुड गुड, हाँ मज़े से, ज़्यादा ना करें कि वो ह्यूमन ना हो, ठीक है। अच्छा अब टिप अप देखें, आप उसके बाद काफ़ी आगे आए हैं ना, उस वक्त उसको तकलीफ इसलिए हो रही थी कि वो लूप में आप कर रहे थे ना, तो लूप में यू कैन अब यू आर इन द ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है, तो अब आप आराम से, मज़े से आप आराम से जाएं। अच्छा यहाँ पे यू हैव द ऑप्शन, नॉर्मली वही होता है कि आप व्हाट यू कैन डू इज, Dr. Wakar? या हेलो, यस, Okay, so transverse colon, usually when we go into transverse colon, Yeah. That's where the loop starts to happen. Yeah. So any tricks for the trainees how to prevent the loop from happening? Yeah. Do you change the position, or do you put Yeah. pressure, or do you do anything else? Differently. Yes, I think basically what I tend to do is, especially if you are in, most of the time the painful loop is the end loop, which I try to get it out before I get into the transverse, because if you go with an end loop into a transverse, it will be very painful. So we've just resolved that loop because he was experiencing quite a bit of discomfort there. Normally with an alpha loop, you can go up to into the transverse colon, and you should advance up to a distance of about 90 centimeter to 1 meter just as a guidance, or you can do it even before that. And once you are in a secure position, I give nice clockwise torque and withdraw the scope, exerting a bit of a suction as well, a very light suction. Sometimes you don't need the suction, and that usually resolves the loop for you, which is most of the time it works if it's an alpha loop. If it's a reverse alpha loop, then you may have to give a anti-clockwise torque to resolve that loop. Most of the common loops are normal alpha loops. Reverse alpha is pretty rare. The common loop that you get are the N loop, which is very painful, and alpha loop, which is more tolerable, but one should resolve it once you are in the transverse colon. An additional thing which I don't necessarily do it myself, but what I tell the trainee is, once they are in the transverse colon, it's a good idea to stiffen the scope up for you, because it eases the progression of the scope. But if your technique is good, you don't necessarily have to do that. But the thing about position change is, if you find progression in a certain position difficult, it's always good to change the position early rather than late, because you will be amazed to see how much difference a change in position makes. So would you consider giving pressure first and then position change, or position change first and then pressure? I think generally speaking, pressure first, then position change. But a lot of the time, if your technique is good, then you don't need to do pressure. But I think with the a lot of the time, you can save the patient a lot of discomfort by resorting to position change, pressure technique early rather than late. Because if you keep on pushing, it just makes them uncomfortable and you lose their compliance and cooperation. The other important thing is, whenever the patient is uncomfortable, always think about air.
because if you got too much wind in, it makes it uncomfortable for them. One should also encourage them to pass wind. अच्छा हाँ ठीक है, अब आप ऐसे करें ये, अब दो मैनूवर है ठीक है, तो एडवांस और टर्न राइट इस तरफ में एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, एडवांस थोड़ा सा एडवांस करें, या थोड़ा सा वॉश रहें ठीक है, गुड, थोड़ा सा इसको टॉप पे ऐसे शाबाश, लूमन आपका इधर है ज़रा, हाँ ये वो कर दिया ज़रा, वॉश है वॉश, अच्छा ये पंप है बेटा, ये यू हैव गॉट अ पंप, दैट्स गुड, इट्स अ लग्जरी यू हैव दिस, हाँ हाँ इसकी कसरत से इस्तेमाल किया करें। हाँ बस इतना काफ़ी है। अच्छा जी, अब देखिए कि आपने किधर जाना है, इधर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है शाबाश, टिप अप एंड एंटी क्लॉकवाइज, गुड, टिप अप, थोड़ा सा विड्रॉ करें मामूली से स्कोप, हाँ टिप अप, हाँ शाबाश, रोल करें इसको, टिप अप करें तो ये खुद ब खुद ही उधर चले जाएगा, ये हेपेटिक फ्लैक्चर में मोस्ट प्रोबेबली यू आर, विड्रॉ करें ज़रा सा, विड्रॉ करें और टिप अप करें, विड्रॉ एंड टिप अप, स्लाइटली विड्रॉ एंड टिप अप, शाबाश, अभी ये जाएगा उधर, टिप अप, विड्रॉ बिट, और ये वॉश करें ज़रा इसको ताकि आपका वो क्लियर हो, व्यू क्लियर हो, ठीक है, हाँ ठीक है, टिप अप, अप, और भी, कीप गोइंग, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज जाए, एंटी क्लॉक उस तरफ, हाँ शाबाश, अब टिप अप, कीप टिप, या दैट्स इट, वेल डन। अच्छा अब इसको उल्टा घुमाएं, हाँ शाबाश, और हाँ यू आर इन द असेंडिंग ऑलमोस्ट, ठीक है, तो अभी हाँ अच्छा, इस स्टेज पे मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू विड्रॉ स्कोप इट विल गो इन, इसको वॉश करें यहाँ पे खूब कसरत से, ऐसे करें तो कहें कि मेरे लिए वो पाइप का बंदोबस्त करें, अच्छा है, अच्छा ठीक है, मेरी पुरानी आदत है, आप इसको बेटा और घुमाएं तो आपको बिल्कुल लूमन उधर है, ठीक है, आप एडवांस करें इधर, शाबाश, अब इसको सक कर लें, ठीक, ये फिर मैं बाद में इसको समझा दूँ, हाँ अब जो है ना इसको टिप को डाउन करें, तो ये हाँ नहीं थोड़ा सा आगे करें, शाबाश, एक मिनट, लेट मी शो यू, आप थोड़ा सा स्ट्रगल करें इधर, एक आराम से छोड़ दें बिल्कुल, हाँ देखिए, काफ़ी स्कोप अंदर है आपका फालतू ना, एक तो स्कोप गाइड भी नहीं है तो इंसान को इतना पता नहीं लगता ना,
तो ये मैं थोड़ा सा इसको ज़रा कंप्रेस कर लेता हूँ। अभी मैं स्कोप बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। इससे ये कि आपका स्कोप रिलैक्स हो जाता है। अब जो है पानी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने घुमा दिया, ठीक है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ यहाँ से मैंने स्कोप को टॉक किया है, क्लॉकवाइज टॉक किया, ठीक है। अब इस स्टेज में इसको आप ड्रॉ करेंगे तो भी जा सके, लेकिन अब ये आप फिर ले लें यहाँ मुझसे, ठीक है। और हाँ, ये स्कोप लें, शाबाश। और सॉरी, एक मिनट आपके लिए मैं आसान कर दूँ, इसको थोड़ा सा नीचे रखें, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, अब इसको, हाँ, शाबाश, एडवांस, ठीक। अभी इधर सक्शन ना करें कि वो आपके ल्यूमन को, पहले अपने आप को इधर पहुँचा दें सीकम। ठीक है, ये अब क्या है, सीकम है, गुड। इसको धो लें ज़रा। और इसकी पहचान क्या है सीकम की? ओके, सो वी आर इन द सीकम नाउ। ठीक है, तो अब ये होता है कि आप जब सीकम पहुंचते हैं तो अब हम सबको बाहर डिनर पे ले जाएंगे। ये तो बड़ी ट्रेडिशन है, अब यू हैव टू डू दैट। अच्छा, ये देखें इसमें बेटा, ये तो वो ट्राइरेडियल फोल्ड और यहाँ पे आपका अपेंडिक्स ऑरिफिस है, ठीक है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। इसको सक आउट कर लें तो यू कैन सी द लैंडमार्क्स मोर क्लियरली। राइट Shani, we got into the cecum and he's going to take us out for dinner tonight. ये साफ करें, शाबाश शाबाश। I think it is important to make sure that you clean it well, you identify the landmarks, and you look for any pathology like polyps or anything that is there, right? Okay, so right with your appendix orifice. अच्छा, इसमें just to tell you about suction techniques. Dr. Wakar? Yeah. Some people recommend retroflexion in cecum. Yes. What do you do? I normally don't do it as a routine unless I am unsure about pathology, because and to be quite honest, I wouldn't recommend it to the trainees, because cecum is a particularly thin area, and if your technique is not good, you might end up with causing perforation. But yes, I mean, if it's needed, then I would do it, but not. And what's your technique of on going into the TI? How do you put it in a particular position, or Normally, it's best done in the supine position, or sometimes in even prone position is much easier if the patient is in prone position. And you approach the appendix orifice, and as you come out, it's towards your 9 to 10 o'clock position. You can see it here. It's not very clean. I just there you can see the ileocecal valve. Right, okay, that's your terminal ileum. So,
withdraw from the, okay, that's the terminal item, right? So you come back from the appendix and it's on your 9 o'clock, so that's where it is, yeah, see? Right? Achha, it is important to get to the cecum, but equally important to spend enough time on coming out. Because withdrawal of the scope is very important, and normally the BSG guidelines is that you should at least spend 6 minutes coming out. So normally हमारी practice ये होती है कि we start the timer, जो यहाँ पे इसके साथ scope के साथ ही लगा होता है, तो वो आप जब वो करते, ठीक है? अब जो है तो अब डबल डिनर हो गया, ठीक है, एक सीकम का और एक टर्मिनल आइलियम का. So we got to give us 2 treats. Dr. Wakar, pictures. Which areas would you want to have pictures of on your report? I think normally one should take picture of the appendix orifice, ileocecal valve, and if you do terminal ileal intubation, then obviously TI pictures. But those 2 are the important ones. The appendix orifice and the ileocecal valve. At times people take it from a distance which is not ideal, because you'll find, as you know, you probably in your own practice also, a lot of the small polyps are located in the cecum. So you are coming too quickly. You need to examine all this very meticulously. The bowel prep is not very good, but still you can make sure that you examine it. I'll just show you 1 or 2 ways of doing it. Okay? So okay, now when I'm coming out, first of all, okay? So as I come out, I look above the folds. I mean, I would obviously want a better bowel prep. I look under it, right? Okay, so you need to, I mean, obviously, but as you are coming out, don't suck too hard, because you don't want the bowel thing to collapse. Now, the other thing is about good suction technique. Now, you see a pool of fluid there, right? So your suction channel is located at the 5 o'clock position, right? So you dip the scope at 5 o'clock position into the suction pool and press halfway down. You don't press the button fully, so it will take the fluid out but not collapse the lumen or catch the mucosa, right? Okay, so you, and now as you are coming out, I'll just show you. Sometimes a fold will come across your view. Now again, we'll dip the scope, and I'm only doing halfway suction. My finger is not fully pressed. Okay, so you're clearing up the fluid, but without sucking the mucosa on. Right, okay. So just check this out. ये क्या है? So it should be at least 6 minutes. The longer the better. Dr. Wakar? Yeah. Suction technique. A lot of the time when we do suction, Yeah. the mucosa comes up. Yes. How do we go about with that? Yeah. Suction I think technique? the best thing is, as you know, that the suction channel is at 5 o'clock. So we bring the fluid at 5 o'clock position, and you dip the scope in it, and you just press halfway down. Don't press the suction button fully down. See, we are clearing this up.
the lumen is not collapsing and the mucosa is not coming in. Right? Okay? So. कन्वर्ट करवाना है सर जी ऐसे नहीं हाँ करो वो खुश है उस तरह आप ठीक है ऐसे ठीक है अगर कन्वर्ट लेना है कन्वर्ट ले सकते बाद में वो उसके लिए फिर कर देंगे रेट्रोफ्लेक्शन के हैं। लिए नहीं ठीक हाँ अगर अभी अच्छा देखें इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगेन आई मस्ट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लूप्स इनिशियली व्हेन वी वर गोइंग इन he was crying out in pain, was in quite a bit of pain, and the moment we took the loops out, he was fine for the rest of the procedure. So that's the importance of, ठीक है तो yeah, that's good. अच्छा, I'll just show you here again. When you are coming out, sometimes the mucosa comes across your field. See the fold? Like this. So the way to avoid this is by making sure that you move your scope tip away from it and then come across it like that. ठीक है तो बजाय इसके कि ये आपके फील्ड को कवर करे जब आप ऐसे आते हैं तो instead of doing that you move the tip up and you let the fold come under it and then you examine it from there. So it doesn't obscure your view and you get a full view. ठीक है, so that's important. ठीक, that's good. ठीक है, that's good. Move away from it. Move the tip away from it. Yeah, that's good. Yeah, and now you look above it. Tip up now. You can look. Now that fold is coming from below, so you move your tip away from it, above. ठीक है, that's good. ठीक है. And withdraw, and then you move down and you look at that part. So the thoroughness of your technique is one of the key performance indicators, because ideally you should be, according to the BSG guidelines, it is 15% adenoma detection rate. But people who are good colonoscopists, doctor like Shanil Khader, and they would have it in excess of 45 to 50%, because the whole thing is how good, how meticulously and how closely you look at the mucosa and pick up polyps. Because if your technique is not good, you pull the scope out in no time, then you are bound to miss a lot of the polyps. You will probably pick up the big one, which even a blind person can pick up, but you will miss out the small flat adenomas. So yeah, that's fine. Okay. Dr. Bakar, do you give Buscopan routinely or only in I don't give special it cases? routinely. I mean, there have been some studies which show that it increases your ADR. More. But if I'm happy that I'm getting a good view, then I tend not to give it. That's Tahira. But yes, I know. Water, please. It's a well-documented fact, and if people find that it is improved their ADR with normal detection, then yes, by all means should give it. Personally, I tend not to give it. Even when I'm intubating the colon, and sometimes I encounter a spasm on the way, I use warm water insufflation. I inject about 50, 60 mils or even 100, 200 mils of warm water, and that relaxes the colon much better than Buscopan would. ठीक है तो always don't इसमें थोड़ा सा आपको ये यहाँ पे you lost your view. ठीक है तो इसको दोबारा ल्यूमन ढूंढे, वापस जाए, ठीक है, जहाँ से सिलसिला मुनक़ते हुआ था वहाँ से दोबारा शुरू करें, जैसे पहले होता था PTV का सैटेलाइट गुम जाता था. आप तो सब पैदा भी नहीं होंगे कि हम लोग जब छोटे थे तो PTV एक ही चैनल होता था पाकिस्तान में, बस वो अगर कट जाता था तो फिर अच्छा हाँ फॉर आर यू आउट. अच्छा बेटा आप ऐसे करें कि आप उधर मुड़ जाएं, ठीक है, शाबाश, शाबाश, करवट लें, ऐसे इसको थोड़ा सा करवट कर लेते हैं. अब ये क्लियर योर लेंस, ठीक है,
हाँ There can be, we can accommodate one more colonoscopy. हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा, यस अभी तो मैं जागा हूँ सही बात है सर, आज आ जाए। हाँ मैं सुबह आया हूँ मैं अभी पाकिस्तान में था ना, 10 दिन पहले मैं वापस गया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ओ 10 दिन के बाद दोबारा बुला लिए। हाँ वही, लेकिन ये तो मैंने मिस नहीं करना था ये बात भाई, पहली दफ़ा यूनिट खुला है हमारा। कहाँ हाँ बेटा आराम से, टेक इट इजी। वहाँ से सर पेशावर, घर पे पेशावर? हाँ पेशावर गए थे हाँ। टिप अप, डोंट डू दैट फोल्ड, हाँ दैट्स गुड बेटर। हाँ पार्टी नहीं बोलती सर आपकी जी, पार्टी नहीं बोलती वो वाली। है ना वही ना, बस क्या करें। पार्टी ज़बरदस्त पार्टी थी, और क्या बारिश हो रही है और आग जल रही है। हाँ वो So, फिर कहीं sir, करेंगे। we're moving on to Paul's room. ओके फाइन, दैट्स गुड, ओके गुड। Paul, can you hear us? No, आराम आराम से शाबाश। can't hear you at all. Paul? Hello? Yeah, can you hear us? Only just. No, don't push blind. Right. Let me get you the view again. So, you've done good. You've done very good. Right, scope, relax. In the hand. Set the scope back. Watch. Anti-clockwise. See the redness there? That's where you've... Tahira, it's camera getting के सामने closer. से हट जाएंगे please. A little bit of suction on there. So, now, tip up slowly. Slowly. Tip up even slower. See it? Anti-clockwise. So you follow. Now draw back the scope. If you draw back the scope, then let the clockwise come in. See? As it comes back, now advance the scope. Keep the scope going in a straight line. Nice and slow. Nice and slow. Nice and slow. Paul, Hello, sir. is your scope guide on? Scope guide is on, but you haven't got it. You have a choice to flick through and then pick it up instead of the image of the room or the screen. So now, what we do now is as we come back, we'll reset this fillet. That needs to come this way. It needs to come. Brilliant. So if you look at the scope guide, we've got the scope on the outside of the hand on the outside. See there where you want to be? See where the liquid is coming from? Yes. The liquid. Yes. That's the direction of the lumen. Okay? Brilliant. Anti-clockwise, remember? Don't do it too quick. You're very quick with your movements. Slow your movements down. Slow them down. Look where the liquid is coming from. The liquid is like a stream. The stream follows a path. The path is the direction where you want to be going. So follow the liquid back. Clockwise torque. See where it's coming from the right. Good. Excellent. Excellent. Stop. You're going under the fold. You want to come back just and look up. There, you see where it wants to go. See? Clockwise torque. Nice and slow. Nice and slow. Good. Excellent. Are you happy? Yes. Good man. I'm happy. I'm working with Tahira, you see, so not worked with her for 4 years. 4 years. Where's the lumen? The lumen is there. No, it's not there. It's at 9 o'clock. 9 o'clock. There's no there. 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, 6. 9.
Great. Excellent. Too much. Talk. Tip up. Bit of air. A little bit of air. Good man. Stop. Draw back the scope slowly. Everything you do, slowly. Look where the lumen is. Come back. Slowly. Tip up just a fraction. See it? Clockwise talk. Slowly. Tip up a bit more. Excellent. See? Slowly is the key, yeah? Slow is the key. Tip up. Good. Tip up. Big wheel back. Don't suck. You've now caught that mucosa. Too much air. Let go of the air. Wait, 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 wait. I've let the air out. Okay. Let me have a little look for you. Pause. Right. Tip up. I'm applying a clockwise torque, anti-clockwise torque, clockwise torque, anti-clockwise torque, clockwise torque, anti-clockwise torque, clockwise torque. There's never one torque to apply. Clockwise torque, clockwise torque. Watch the patient. Watch the patient. Watch the patient. Clockwise torque. Just a small amount of suction. Is she better now? Regardless of the vital, we've talked about vitals, how delayed they are. So, how is the patient? How's she feeling now, Taylor? She is okay, sir. Great. Paul. Great stuff. Right, my friend, so all I did there was just take the scope back nice and slow. Nice and slow. All the time. And come back, ever so slow. See where the lumen's going. Where's the lumen going? Now, I'm getting the lumen at 12. Where's the lumen? The lumen is now at 3 o'clock. This is now at 11 o'clock, 1 o'clock. Paul, can you tell us what you're doing? Are you... I've de-looped and it's seeming to want to keep going round in a clockwise motion. Now what we're going to use now is just a little bit of warm water just to open up the bowel. Just a little bit. There, it just opened up just a fraction in front of us. Just 1 second. I just want them to see the effect. Now, please. Please. So, no air, as you can see there. We just put the water in, just giving it a few moments. We're climbing up the ladder, as you can see there. Let the scope sit and wait. Pause. If you look at it, can you see the scope guide? Yes. No, we can't see the scope guide. Okay. We can only see the endoscopy image. No, it needs to be pointed at the patient, otherwise it won't pick up the image.
Right. It's a shame you can't see the scope guide because you'll see how the lumen is appearing. Now we can see the scope guide. Okay. So you've got both a anterior view and a lateral view. How's she doing? She okay? Is she okay? She is okay. Sure. She's fine. Are you sure? Tahira, is she okay? Sir is asking if she's okay. You sure? So what I've done, I've applied a clockwise torque and drawn the scope back. Now I'm going to put a little bit of air. Sorry? Pain free. Good. So, and if you notice how we actually reduce this, come back with a clockwise torque here, tip up, tip down, tip up, tip down, as I'm drawing back with the clockwise torque. Tip up, tip down. Now the ladder, tip up, tip down. Just suck back on some of this air that we've got here. And now, again, tip up, all the way back. And you'll see it go round. And that's how you get round the splenic flexure. My friend, scope's yours. Big wheels back. Good. You've caught the mucosa, stop. So what we do now, don't do anything, don't suck, don't do nothing. We'll let go of the mucosa by taking the bung off. Wait a second, wait a second, wait a second, now you can advance. How do you know? Is the scope going forward? Avoid you crashing Paul? into the... Yes, sir. We have a question. Is there a technique to cross the splenic flexure? Particular technique? A lot of people in the UK will actually put the patient on the back, and then the patient will automatically, by putting them on the back, you'll have applied 90 degrees of clockwise torque. Then withdraw the scope, and then the scope will fly to the mid-transverse colon. That's what I normally do. In Pakistan, though, I try to keep ladies stable, so that's the reason why I've not done it. And what's your view about water, using a lot of water in sigmoid colon? I just did. We just did, and that's why it went So how through much would you use? in that instance, I think we used 60 mils. Yeah. That's what we used. Behind this scope, I have difficulty. Okay. Let me have a little look for you. So, if we look at the scope guide, can you see the image on the scope guide? Hello? Hello? Sorry, yeah. Take that out, 2 seconds. Right, anything that's brown, so you can see that the tip coming back to mid, say the next 30 centimetres, that's guess is where it is. Anything that's grey, that's what the scope is actually being picked up. Anything that's dark grey, that is closest to the scope guide. So what you've got there, people forget that the scope itself will actually go in a 3D position. So when you work on scope guide, I actually split the screen when I'm teaching with it. From Now, here onwards, sir. clockwise torque brings back here, and then you can suck just to hold. I'm pointing the scope up into the air. What that's doing then is actually bringing back the bowel to you. If you look at scope guide now, you'll see that the scope is perfectly straight. Yes, it's perfectly straight. Now what we'll do is keep that torque on. The scope will re-loop, but will re-loop less. Has less loop potential as she goes forward. She needs a little bit more gel. So what I'll do, go, and there.
So I always draw the scope back then and then apply a little bit of gel. So as the scope goes forward, just let it go and now draw back the scope. So I go forward. If you remember what I was teaching, is go forward, withdraw, go forward, withdraw. And again, just advance. It's just that it's a little bit more because being in Pakistan, I try to keep the ladies on the side, not to move them around too much. Now I'm going to put that loop into the scope that I know I need to put in, which is a clockwise torque to take So out. we can have a run back. I know, but I try not to. And then back again. I avoid complaining about equipment because it's not the equipment. No air, just advance just a fraction. I'm checking the patient, is she okay? Is she okay? Yes, sir, she is okay. Yes, please. And then draw back. What happened here in this case, she actually had been sedated for a good 20 minutes before we actually started the procedure. We had a problem with one of the scopes before, so we couldn't actually start the procedure, and so we actually were waiting for a scope, I'm afraid. Something just bombed. All is okay. Okay, can she come onto her back now? Then? We are back. Yeah, please. बेड में लेटते हैं ना आराम से थोड़ा सा आराम से इस तरह जाएं शाबाश शाबाश ऊपर करें अच्छा ऊपर कर दें Oh no, I keep that down. I keep them down. No, I don't have them up in the air. So I don't have them crossed over, I don't have them up in the air. So move the patient, always draw onto the back, always then suck and come back with the scope. Now she's been moved. What's she saying to her? being gently Oh, I'm gentle. Can I just feel the tongue to here? Nice. Where is that? sir what's this How to use scope guide. So I've given Tahira the clip. What she does, she puts it through her fingers, holds it there, that then pushes down onto the loop, and then she pushes her hand down onto the patient where that is. That shows you where it is. And as she applies the pressure, that's the best way of using scope guide.
This type of scope guide is no longer in use, doesn't get sold anymore. Sorry? Pressure. Please, please, please. She better? Oh. She okay? Now, if you're wondering what I did there, that's actually just gone round. So when you actually do that manoeuvre there, that actually takes the scope round, and you can bring it back, the scope itself. Is she better now? No? What's that? These are seeds of Watermelon. Watermelon. Is she okay? Is she okay? she's okay, sir. She's fine. She doesn't sound okay. Whee! Bubble.
change the position of the literature? Oh, we're there now. Yes, pathology here. Why? Because there is blood or something. That's not blood. That's the prep. You get used to, when you come to Pakistan, preps that are not that brilliant. Now we're in this cecum, we're in the last few remnants of the cecum. We're having a good look around. It's at this point I will look around with the little wheel. If you see, I'm just moving the little wheel, just to look around. It's all normal by the looks. Terminal ileum. And out. See, you would be forgiven for thinking that's some pathology, but it's a bubble. Bubble. Yeah, plenty of fruit. This is cecum or not? Yeah. Yes, cecum. Well, I'm looking for the landmarks. That's the reason why I'm moving everything around. There's the, see there? What's that? There. This is the well. So what's that? Sorry to hear it. सब कहते हैं That's your appendix there, look. Can you see? Shift out on lateral or shear? If you want. Yes, sir. करवट पे चली जाए, कमर से थोड़ा पीछे आ जाए। चले जाए, शाबाश। पाँव थोड़ी सी आगे करनी, पाँव थोड़ी सी आगे करनी। देखिए। कमर से पीछे है, पीछे है, पीछे है। पीछे, पीछे, पीछे आए। पीछे मेरी तरफ आए, ये हिस्सा पीछे लेकर आओ, थोड़ा नीचे भी हो जाए। दोनों को ठीक कर दे।
if Waqar has started, Waqar, can we shift to your room while Paul is sorting this one out? Right. Hello. Hello. Yeah, Paul, I was just suggesting while you're trying to sort this one out, I think they've just started at Waqar's end. Waqar in our room, so is it okay if we shift there? Certainly. Okay, thank you. सॉरी नाम क्या आपका? Kamran. कामरान, सॉरी हाँ। अच्छा, मैं तो बड़ा फेमस कामरान हसन को जानता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ ठीक है। Saad, are we on air with you? Yes, Waqar, Okay. we are Right. with you. I was just telling Kamran, in fact, Eric pulled a trick on him. First of all, for all the candidates, just like a pilot before he flies the aircraft goes through a whole list of checklists, checks everything, the engine is working, the oxygen tension is fine, the brakes, everything is working. So just before you start your scope, you do a checklist of looking for suction, make sure the suction is working, the airflow is working, and the water jet on the lens is working, and finally the light is working. So always make sure that you are you got the scope in before you got the scope is in a working order before you insert it in, right? Okay, that's good. Good, right? Just, yeah, okay, that's fine. Just hold it there. Slow down. Clear your lens first. Okay. Keep the scope on the bed because it is much easier for you then. Okay? So now just withdraw because you can't see anything. So whenever you can't see anything, withdraw. ठीक है? Now. Yeah, okay, that's fine. So just hold the scope steady. Now just approach gently because the moment you speed up, your procedure will slow down. If you slow down, you'll be able to do the. Now, the problem is you keep on doing this, then you leave it, then it goes back to square one. So just hold it there, and from here adjust your position. Now see, I'm holding the scope. Now I know where the lumen is. So now tip up, tip up, tip up. Yeah. So when you are going to move the tip up, the fold comes toward you. So withdraw at that time. So withdraw at that time, and then yeah. No. Don't fight against me. I'm just trying to. So just yeah. Tip up. Yeah. Here and tip up. Now. Tip up, more. So that's where your movement is, okay? So you can advance here, okay? The withdraw, on, keep. Now advance, your movement is there, okay? Just, yeah, that's good. That's good, tip up, yeah, that's it. Keep going, yeah. Now, just hold it there, slow down, don't rush. Clear your lens, okay. You can see, because you would never drive a car if you got mud on your windscreen. You would always wash it first, okay? So that's the same thing. So now advance gently, slightly counterclockwise. And now tip down, slow down. You are too fast, and when you are too fast, you end up like this. If you are not too fast, I'll just show you. You leave it, just, okay. See, now, okay. So I will work my way around the lumen, where the lumen is. Right, okay. So I keep on withdrawing because the lumen keeps coming, the wall keeps coming at me. So just slipping away from me there. I'm just going to get hold of it now. Again, okay. So it comes here. I'm slowing down, I'm not rushing in. Right, okay. I'm just staying where I am. At the moment, I'm literally stuck where I am. I'm only turning the scope around. I'm not moving forward. If anything, I'm moving back a bit. I've still not pushed the scope in at all. I've not moved forward. I'm only turning it around. अभी ठीक हो जाएगा बेटा. अभी ठीक है. So I'm just over there, right? Okay. So that's how the thing is. See, I've not moved again. My hand is stuck there. See, all I'm doing is
Now you can take over. It's in a bit of a torque there, in a clockwise torque, yeah? Okay, so hold the scope and hold it on torque. Torque there, yeah? No, the other way, the other way, the other way, the other way. No, torque the other way, that way, yes. Yeah, okay. Now you can advance. So slow down. Now torque there, clockwise torque, where the way I was doing it, bas param. The other way now, opposite torque. Go anti-clockwise. No, slow down. Don't rush. Wapas ka wapas. Go back, go back, go back. Yeah. Go back. Tip up. बेटा खैर आप हवा खारिज करो, कोई वो नहीं है, आराम से आराम से आराम से रो slow down a bit. You are your own worst enemy. You rush too much. And I was just stuck at one point and I cleared the whole. शाबाश. इससे बेहतर फील हो रहा है? हाँ, फिक्र मत करो, ठीक है? हाँ, हवा निकाल दिया करो. अच्छा, now go further in slowly. Tip up, tip up, tip up. हाँ, stop. Okay. Now tip down, advance slightly. No, okay. Again, advance slightly, and just okay. Over here you can tip up, suck the air out, suck air out, suck air out, air out, suck air out. That's it. That's enough. Okay. ठीक है? अच्छा, if you get stuck, one of the things is you take this off, the mucosa will come out. Okay. Now advance. Okay. The moment you suck the air out, it advances easily because it decompressed it. ठीक है? No, just turn around clockwise that way. Okay. Tip down, tip down, tip down. He's got diverticular disease. ठीक है? Now turn around, around. Now that's enough. Turn back that way. Tip down. Advance gently. Advance gently. Advance gently. Tip down. Tip down. Tip down. Tip down. Tip down. Tip down. Withdraw. 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 Now that's clear your lens. Clear your lens. ठीक है? You got a water pump as well. You can press. ये पाँव के नीचे कामरान, ये पाँव के नीचे पंप है, इसको दबाओ. शाबाश. हाँ, ऐसे. ठीक है? अब ल्यूमन आपका उधर है. अब एडवांस करो और हाँ, ठीक है. शाबाश. गुड. टिप डाउन और क्लॉकवाइज टॉक. विड्रॉ करो थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा विड्रॉ करो. शाबाश. हाँ हाँ, बस. थोड़ा सा वो दे दें. ड्रॉ में कौन भी और हाँ, शाबाश. ठीक है? अब इधर देखें. हाँ, क्लॉकवाइज टॉक दें. शाबाश. बहुत सारा टॉक क्लॉकवाइज. नोरम वर्क. हाँ, एक मिनट में तुम्हारे यहाँ पे ना बोला बिल्कुल scope. If you hold it straight, then you won't feel the torque yourself. Okay? Now see, I'm not pushing any further. I'm only holding the torque. Right? Now what I'll do is, he's uncomfortable, so I'll just suck the air out. I'm not pushing it any further. It's semicular. Now it will go itself. Again. Keep it on torque. Torque that way. Double run. Okay. You can advance gently. Advance. Okay. Advance. अच्छा, ऐसे करें कि इसको पोजीशन चेंज कर लेते हैं. ठीक है? ठीक है. You want me to wait? We'll change this position. Okay? Hold the scope. Otherwise, you lose your position. So let them change him. Okay? सीधा लेटें बेटा, उससे आपका आराम हो जाएगा, आसानी हो जाएगी. ठीक है? शाबाश. हाँ, सीधा करवट बदल लें. शाबाश. हाँ जी. ज़रा अंदर की तरफ जाएं ताकि आप हाँ नीचे. यहाँ से नहीं जाए, यहाँ से जाए. शोल्डर आपके उधर करें. हाँ जी, ऐसे. शाबाश. बहुत आला. ठीक है? हाँ. ओके. अच्छा, अभी आपने सक्शन अप्लाई करनी है बहुत जेंटली. ये स्कोप नहीं सिखा रहे भाई. स्कोप इधर करें. ठीक है?
ऊपर करें इसको। पहले देखिए जब सेक्शन करते हैं तो टिप को म्यूकोजा से क्लियर रखें ताकि वो बीच में म्यूकोजा ना फंसे। इसमें एक बार थोड़ा सा मैं आपको सेक्शन का टेक्निक बता दूं। एक ये होता है ना कि आप जब भी करते हैं ना तो बटन पूरा ना दबाएं ऐसे, ठीक है, आधा, हाँ, उसमें फिर आपको वो नहीं होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब एडवांस स्कोप, एडवांस, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज जाएं इस तरफ, हाँ ऐसे, शाबाश, ठीक है। और टिप अप करें एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर रखें टांगे, ठीक है, तो आपको आसानी होगी फिर। आराम से देखें, जोर ना लगाएं। ये जब भी आपको नज़र नहीं आएगा तो आप पीछे हटेंगे। अगर आपको नज़र नहीं आता यू कैन नॉट पुश थ्रू ब्लाइंडली, क्योंकि ये उसके थ्रू जाएगा। आपने पहले देखना है कि लूमन किधर है आपका, थोड़ा सा विड्रॉ करें, हाँ देखें। अब ये आपको वंस यू नो वेयर योर लूमन इज देन यू आर ओके। अब नाउ व्हेन यू गो देयर गिव अ एंटी क्लॉकवाइज टॉक, हाँ, इसमें लेट मी शो यू और द मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एंटी क्लॉकवाइज पाओगे। इस वक्त आपके पास सिर्फ एक वो है मूवमेंट है, अप एंड डाउन, ठीक है। आप इस वक्त, लेकिन आपका ये साइड वे है, तो साइड वे पे तो अप एंड डाउन का फ़ायदा नहीं है ना। जब मैं आपको कहता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रोक आप दें, जब आप एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रोक देंगे तो लूमन आपका टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर आप अप एंड डाउन जाएंगे तो आपको मतलब फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, आपका लूमन फिर ऊपर है, देखिए आप ऊपर आ गया ना, ठीक है। तो इसलिए अप एंड डाउन आपको मतलब ये वो करना पड़ता है, अब लेगा, ठीक है ना। अब एडवांस करें, शाबाश, थोड़ा सा इसमें पानी वो करें तो उससे ज़रा खुल जाएगा लूमन। हाँ ये भी खुल जाएगा, खैर है। वो इसका ये पंप से पानी डालें तो उससे ज़्यादा चांस हो जाए, रिलैक्स हो जाएगा बाल। हाँ ठीक है, हाँ अब क्लॉकवाइज टर्न दे, शाबाश, वेरी गुड, सही है। चलो भाई, मुबारका मुबारका। किधर पहुंच गया सर? ये कौन सी जगह है? अच्छा चलो ठीक है, इसको साफ करो बेटा, चलो गुड। ज़रा सिरिंज से ज़ोर से वो कर लें कि जो सही हाँ, एक मिनट इधर आपके लिए साफ़ कर देंगे, थोड़ा सा ज़ोर से करना होगा। हाँ जी ज़ोर से और भी हाँ जी वॉश करें।
ठीक है बेटा, दिस इज अपेंडिक्स ऑरिफिस, और ये ठीक है, दैट्स द सीकम है। हाँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू गेट द आइलोसीकल वाल्व क्लियर, लेकिन वो काफ़ी इधर स्टूल है, तो ओके, सो दैट्स, चलो भाई सबका खाना हो गया आज फिर अभी कामरान सबको आज खाने पे ले जाएगा। चलो अब जो है नॉर्मली मतलब इट्स गुड टू वॉश इट ऑल, और आप सारा ये चेक कर लें, ठीक है। टर्मिनली हम आप कोशिश करें, लेकिन मतलब ये है कि उधर काफ़ी स्टूल है, तो मतलब दिक्कत होगी, उसको डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब यू डोंट नीड इट बिकॉज इंडिकेशन कोई इतनी ख़ास नहीं है। अब उसको ठीक है विड्रॉ शुरू करें, लेकिन एक बात याद रखें, विड्रॉल जो है इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंसर्शन, क्योंकि यू शुड एट लीस्ट स्पेंड 6 मिनट्स इन विड्रॉइंग, ठीक, ताकि आपको मतलब सब चीज़ें आप बड़े थॉरली देखें। अगर कल आपका कोई कज़न या कोई भाई या कोई आप मेरे पास आएगा, तो आप उसे कहोगे कि यार वकार ने तुम्हारी कोलोनोस्कोपी की है, आई एम श्योर कि उसने बड़ी सही की होगी, क्योंकि वो बड़ा टाइम लगाता है। अगर तुम कहो कि यार ये किसी और ने किया और वो 2 मिनट में बाहर निकलता है, तो तुम्हें खुद भी यकीन नहीं होगा कि उसने कोई देखा भी होगा कि नहीं। तो देखिए बात ये होती है कि आप औरों के लिए भी वही सोचें जो आप खुद अपने लिए सोचेंगे। अच्छा, हाँ जी, इसको सक कर लें। इसका मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। इसको जो फ्लूइड पूल है, इसको आप देखें, स्कोप को आप घुमा सकते हो ना, ठीक है। तो आपको जो सक्शन चैनल रहता है 5 o'clock पोजिशन, ठीक है, तो इधर है, तो मैंने इसको डिप कर दिया फ्लूइड में। अब मैं इसको सक्शन कर रहा हूँ, एक तो 5 o'clock पोजिशन में फ्लूइड, दूसरा मेरा जो बटन है ना ये पूरा फुली डाउन नहीं है, आधा डाउन है। फुली डाउन होगा तो एकदम इसमें ग्लूकोज आ जाएगा। हाँ व्हील नहीं बेटा, ये हाँ ये बटन है, सक्शन बटन है, ठीक है, ठीक है। नहीं आप पूरा दबाते हैं, आधा दबाएं, नो देखें इसलिए आधा आधा दबाओ, हाँ ऐसे, समझ आई। देख आ जाता है ना फिर, ठीक है, दैट्स गुड। अब ऐसा ऐसा बाहर निकला हो, ठीक है, क्योंकि मतलब सॉलिड फीस है, इसको आप सक नहीं कर सकते ना। अच्छा, अब ये जो है ना, इसको आपने बड़े आराम से देखना है सारा, कि कोई छोटा पॉलिप या फ्लैट एडिनोमा वो तो नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आप हर एक फोल्ड, हर एक उसको चेक करेंगे। हाँ, हाँ। अब ये जो है ना, अंग्रेजी में बात कहते हैं दिस इज़ हाउ नॉट टू डू इट, एकदम निकल आया ना। इसमें फिर ये होता है कि आप दोबारा वापस जाओगे, ठीक है, उस तरह मोड़ोगे लेफ्ट, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, बात इधर रुक जाओ, यहाँ से आप स्लिप हुए थे। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और टेक्निक बता दूँ, इसमें ये होता है कि आप जब बाहर निकलते हो, अब मैं निकल रहा हूँ ना, ठीक है, उधर देखें ये फोल्ड आ रहा है ना, ठीक है। अब ये मेरा इसको कवर करेगा, ठीक है, इट विल कम इन फ्रंट ऑफ मी। तो अब मैं ये करूँगा कि बजाय कि ये मेरी व्यू ख़राब कर दे, मुझे पता है कि इधर से आ रहा है, तो मैं इसको नीचे टर्न कर लूँगा ताकि मेरा, अच्छा अब ये इधर से आ रहा है, तो अब मैं इसको ये करूँगा कि अब अगर ये आ रहा है तो मैं इसको उधर घुमा लूँ, तो ये मेरा व्यू ऑब्सक्योर नहीं करेगा, मैं इन फुल व्यू आऊँगा। फिर दोबारा मैं इसके ऊपर जाके इसको ऊपर से देखूँगा, नहीं जो अगर फोल्ड जिस तरह डायरेक्शन से आ रहा है ना, अगर ऊपर से आ रहा है ना, तो आप नीचे जाएंगे, उसका ऑपोजिट जाएंगे। अब जैसे ये इधर मेरे 9 o'clock पोजीशन से आ रहा है ना, तो मैं 3 o'clock पे चले जाऊँगा, ठीक है ना, ताकि वो मुझे मेरा व्यू ब्लॉक ना करे, ठीक है। फिर मैं उसको दोबारा आराम से देख लूँगा, ठीक। तो अगर ऊपर से आ रहा है तो आप नीचे डिप करें उसको, टिप को, आराम से आराम से।
ये जो, हाँ ये बेटा अपना ये क्लियर करें लेंस, हाँ ये शाबाश, हाँ क्योंकि पंप वाला अक्सर बाद वक्त नहीं क्लियर करता ना, तो पानी जो ऊपर से होता है ना वो लेंस के ऊपर, दैट क्लियर देख। हाँ अब देखिए ये ऊपर से आ रहा है ना, तो आप उसको हाँ नीचे पहले मूव करें, हाँ ऐसे, फिर आप ज़रा पीछे ले जाएं, अब वापस जाएं, अब चेक करें इसको, ठीक है अब सही हो गया। ठीक, गुड, अब देखिए इसमें आप एक जगह पे फंसे हुए हैं ना, तो आपने ठीक है ये थोड़ा सा इसको डिकम्प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हवा है, ठीक है। और नाउ व्हेन यू आर कमिंग आउट, तो यू लुक अराउंड ऑल प्लेसेस, सिर्फ एक जगह पे आप कंसंट्रेट करें थे, बाकी जगह आपसे सारी मिस हो रही थी ना। तो आपने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, और इसको आप इधर से भी देख लिया, ठीक है। क्योंकि मतलब ये छोटे पॉलिप्स आपको कहीं पे भी नज़र आ सकते हैं ना, तो आप पूरा इसको कवर करें, ठीक, सही है। तो ये जैसे जिस तरह आप टॉक स्टीयरिंग करते हैं ना जाते हुए, तो आप व्हेन यू आर कमिंग आउट, तो यू आर डूइंग रिवर्स टॉक स्टीयरिंग, यू आर डूइंग टॉक स्टीयरिंग इन अ रिवर्स मैनर, ठीक है। तो उसी से आप कंट्रोल करते हैं, सो दैट यू कैन कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द म्यूकोजा। उसको वापस ले जाए, शाबाश, हाँ, या दैट्स बेटर, ओके। नाउ कीप withdrawing, keep coming out slowly, gently, yeah, now move away from it, yeah, okay, ठीक है, हाँ हाँ उधर जाए, शाबाश, ये ठीक है, सही है, बिल्कुल गुड, आहिस्ता आहिस्ता, गुड, हाँ दैट्स गुड, गुड। और दूसरा जो पंप है, तो मेक यूज़ ऑफ इट, ये उसका नहीं है जो जहाँ पे कहीं स्टूल हो कुछ हो, तो मेक यूज़ ऑफ दैट, फायर जेट, वाटर जेट एट इट। अब इसको ठीक है, यू कांट, लेकिन यहाँ से यू कैन मूव इट, ठीक है, तो इसको आप पंप से फायर करें, हाँ, एंड सी यू कैन मूव इट, हाँ, यू कांट सक दैट थ्रू, इट्स सॉलिड फीसिस, बट एटलीस्ट यू कैन सम टाइम मूव इट, तो यू कैन सी, हाँ ठीक है। अब वापस आए, ठीक है, कीप कमिंग आउट, या स्लोली, जेंटली, यस, कीप लुकिंग, हाँ दैट्स गुड, हाँ मूव अवे, या अप, या हाँ इसको शाबाश, ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, दैट्स गुड। देखो उसको मतलब सख्त तो आप नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपने चेक कर लिया कि वहाँ पे इट इज़ क्लियर, ठीक है, हाँ ऐसे, गुड, ठीक है, सही है, टिप डाउन, शाबाश, टिप डाउन। अच्छा, अभी आप सिग्मोइड वगैरह तक पहुंच गए ना, तो नाउ टर्न हिम ऑन टू हिज लेफ्ट लैटरल पोजीशन, ठीक है, क्योंकि आपने अगर रेट्रोफ्लेक्शन करनी होगी तो फिर ये नहीं, हाँ उधर करवट ले लें, ये आप अपना स्कोप पकड़ें, ठीक है, शाबाश, हाँ गुड, दूसरा ये है ना, जब भी आप करें ना, तो डोंट लूज व्यू ऑफ योर ल्यूमन ना, ठीक है। मतलब आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में आप किसको देखते हो, बैट को कि बॉल को? बॉल को देखते हो, ये भी तुम्हारा बॉल है, स्कोप को नहीं देखोगे, स्कोप इज योर बैट,
यू वॉच योर बॉल, ठीक है ना, तो तभी आप स्ट्रोक मार सकते हो ना। ठीक है, आराम से, यहाँ पे थोड़ा सा स्पाजम है तो मज़े से, हाँ ठीक है, शाबाश। ठीक है, इसी तरह आराम आराम से देखें। गुड गुड, हाँ इसको क्लियर करें, या इसके ऊपर वाटर जेट मारें। अच्छा, ये हाँ ये पॉलिप है, ठीक है। एरिक, ये कोल्ड स्नेयर करना है इसको, हाँ स्नेयर पॉलिपेक्टिक, हाँ ये ज़रा साफ करो बेटा इसको, सही, मतलब इट लुक्स लाइक यहाँ पर प्लास्टिक, लेकिन ठीक है। वो आपने पॉलिपेक्टिमी किया पहले? हाँ वो करेंगे, स्नेर करेंगे, स्नेयर कर लेते हैं, जो भी हो, फोर्सर से भी कर सकते हैं, काफ़ी छोटा है। ठीक है, हाँ स्नेर दे दो बेटा। चले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं है कोई, लेकिन उसके ये रेट्रोफ्लेक्शन के लिए आप लेफ्ट लैटरल मेथड डालते हो। दर्द नहीं होगा, खैर और ऐसे चले, एक मिनट, वो नहीं, सिर्फ कोल्ड स्नेयर करना है, हाँ वैसे ही काटना है उससे। हाँ 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 हाँ, छोटा वाला बिल्कुल, चलो खैर है जो भी हो। जल्दी आओ बेटा। ओपन, क्लोज, हाँ कट, कट किया, वो ट्रैप लगा है, वो हाँ वो गॉज लगा दो तो ठीक है, ये काट दिया, इसको कोल्ड स्नेयर कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं, अच्छा अब इसका ये है ना कि देखें आपका सक्शन चैनल जो है ना, वो 5 o'clock पोजीशन कहते हैं, मैंने इसको 5 o'clock पोजीशन पे लिया था, एंड आई सक इट हियर, ठीक है। आगे चेक कर लें, ये थोड़ा सा पानी दे दें सही में, नहीं इसका, अच्छा चलो ठीक है, नहीं इसको नहीं, मैं पैसिव सक्शन करता हूँ उससे आ जाता है। अब चेक करें, वरना तो नहीं कोई इतना ख़ास वो था भी नहीं। चलो बेटा ये आखिरी वो तुम कर लो, ठीक है, नहीं बस ठीक है, डोंट वरी। ठीक, ओके, आराम से ह्यूमन अपना वो करो, क्लियर करो पहले, ठीक है, फिर आपने रेट्रोफ्लेक्शन करनी है, ठीक है। हाँ अभी वापस आओ, आप जब बिल्कुल एनल वर्ज पे पहुंचे हो ना, अभी ऑलमोस्ट, तो आराम से बस बस इतना, अब यहाँ से आप फिर दोबारा अंदर जाओगे और उसको व्यू को वो करोगे अपना, ठीक है। हाँ हाँ, और अंदर जाओ, अंदर जाओ, शाबाश, आराम से जाओ, हाँ अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर एडवांस करो उसको, शाबाश। हाँ थोड़ा सा वो फील होगा आपको,
यहाँ पे थोड़ी सी, हाँ अंदर जाओ, शाबाश, कीप गोइंग, या कीप गोइंग, हाँ हाँ। अब थोड़ा सा इसको घुमाओ, टॉप दो तो वो आपका ये रेट्रोफ्रैक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे आप तो नॉर्मली आप इसकी पिक्चर लेंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा अंदर पुश करें, एडवांस में, बात, दैट्स इट, ओके। और पेशेंट को पहले वार्म कर लिया करेंगे इफ यू फील अनकंफर्टेबल, ठीक है, दैट्स इट, ठीक। हाँ अब क्लियर करो, इसको सीधा करो और फिर सक्शन करो, सक द एयर आउट, ठीक है, एंड उसके बाद कमाल। ये ज़रा हाँ सब जितना कर सकते हो कर लो, ठीक है। सब कुछ ठीक है। नहीं आपका सब कुछ ठीक है, परेशानी की बात नहीं। मेरा फाइल नहीं पड़ा है ऑफिस में। डॉक्टर बता। हाँ, कैसे हो गया उसको बांध दो आप।